हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अभी तक के आपने जितने भी प्रिपरेशंस किए हैं आई होप अच्छी चल रही होगी एंड ऑल्सो रिमेंबर यू डोंट हैव टू पैनिक as you all were online batch and now you've shifted to offline batch. The paper is most probably going to be a little simple and checking भी lenient ही होगी. So here I am going to give you certain suggestions and we'll be going through a quick revision of the subject which is e-commerce and business communication. So as you all know, e-commerce जो है वो हमारा MCQ paper है और BC जो है which is our business communication paper, that is written paper. Okay, so let's start with EC. EC क्या है? Electronic commerce, which it is. इसमें हमारा 5 chapters है which is introduction, जिसमें बताता है EC क्या है, why is it beneficial, how is it helping us, and then it comes to ECRM and SCM. SCM is what? Supply chain management, and ECRM is electronic customer relationship management. Electronic customer relationship management में क्या है कि आप कैसे अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, कितने अच्छे से वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हो so as to get repeat customers. In supply chain management is how the products are being continuously available in your supply chain so that you can satisfy the demand and supply process. Next is digital payment. Obviously nowadays what is happening, just because e-commerce has arisen so much, so what happens is we always prefer sitting back at home, do shopping, and then we prefer paying things online, right? जब हम लोग Myntra में, Amazon, Flipkart कहीं पे भी shopping करते हैं, we get huge variety of options, and therein what do? We do the payment through a digital payment system, which has been advanced a lot. Next is ERP, which is Enterprise Resource Planning. This is also one of the most important chapter in which you will be learning about how resource planning is done, like how we recruit employees and how do we do their training and development so that we can just keep a hand of good number of employees in our company. Next and last is new trends in e-commerce. There are a lot of new trends which is arising, which is because of the internet and etc. Okay, so let's move forward. Let's start what it is. We will be starting with our first chapter, which is introduction. Introduction में क्या है? E-commerce, which we already know, electronic commerce. ठीक है, electronic commerce क्या है? It may be defined as a process which involves sharing of business information, maintenance of proper relationship among different businesses, application of telecommunication networks so that the business transaction can be conducted 24/7 basis. So as we all know, nowadays what is happening, work from home is there. There are so many people who are so busy with their daily schedule work, right? So what do we need? We need an access of 24/7 basis. Like if I am scrolling down my phone feeds and then there I get to see something which I like it. Okay, so if in general we talk about offline stores, we cannot just go and have an access of that online store, the offline store, right? So what do? In e-commerce we have this facility of 24/7 basis. Okay, now if you want to have take an admission over inside a college or anything, any knowledge you want, any information you need about business or anything like that, what you can do, you can use this e-commerce facility and then we can go ahead. This includes tangible and intangible item. Okay, so basically what you need to do, I'll tell you, you just go through the subject matter, what it is. आपको उसकी मीनिंग अगर अच्छे से समझ आ जाए ना, like the basis through which you are going to fetch answers, then आपको इतना प्रेशर नहीं आएगा. ठीक है, so always make sure कि आप बहुत ही simply study करो. Don't try to mug things up. समझो कि what the matter is trying to explain you and accordingly go ahead with that. ठीक है, so tangible में क्या है, जैसे कि पकड़ लो मैं बुक ले रही हूँ फ्लिपकार्ट से, and intangible item जैसे कि सॉफ्टवेयर खरीद लिया मैंने और ये डेटा खरीदा एक्सेट्रा. Now intangible items कुछ ये भी है जिसमें एयरलाइन टिकट्स मैं ले रही हूँ, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ एयरलाइन टिकट्स. So these are the services which they are providing. Now what is the concept of e-commerce? E-commerce जो है उसमें there are paperless exchange. ठीक है, I don't have to give you a rupee का note or something like that, or I'm getting a draft. ठीक है, तो अभी के टाइम में what are the things which are there? Electronic data exchange, EDI. ठीक है, electronically we are exchanging data. Email through which I'm sending message to you and the invoices or anything.
Electronic bulletin boards, these are the boards which is there in the website so that you can get the information, you can fetch all the needed information which is there, the knowledge. Electronic fund transfer, this is for this EFT is for exchanging the money from one to another. Other network based technologies are also there. It is very important. Okay, what are the advantages? Traditional से अगर हम लोग देखा जाए तो आज ई कॉमर्स कैसे फायदा कर रहा है हमारे को, इंडिविजुअल को फायदा कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को, सबको फायदा कर रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनली हमारे को क्या करना होता था, हमारे को जाके पैसे जमा करना था, यू रिमेम्बर विड्रॉल स्लिप आता था, ठीक है। तो अभी एटीएम मशीन आ गया, अभी यू कैन जस्ट ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर आर अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज व्हिच हैज बीन अराइज। पहले के टाइम में ब्रोशर्स वगैरह रहते थे वेयर यू नीड टू गो टू द कॉलेज कलेक्ट दैट। अभी सब कुछ वेबसाइट में आपको मिलता है रेडीमेड, ओके। सो nowadays what happens is like अगर कस्टमर को कुछ नहीं पसंद, नेक्स्ट डे उसको दुकान जाना पड़ता था, एंड देन वहां से यू नीड टू have whatever talk you wanted to. But nowadays what is happening, you can just simply go to the website, वहाँ पे customer care है, customer support system है, therein you can give the feedback, reviews, everything. So everything is transparent nowadays, okay, you cannot hide anything. बेनिफिट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा मिलते हैं हमारे को। यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है, जैसे कि जब से ई कॉमर्स आया है वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ सर्विसेज देयर। लाइक अर्लियर वी यूज्ड टू ऑर्डर समथिंग, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता है ना वैसे वैसे धीरे धीरे करके ई कॉमर्स में भी बेटरमेंट आता है। जैसे कि कन्वीनियंस, यू कैन सिट बैक एट होम, यू कैन fetch the information data, you can get the material at your home delivered, ठीक है। स्पीड ऑफ सर्विसेज पहले 15 डेज लगता था, 7 डेज, अभी एक्सप्रेस डिलीवरी वगैरह भी आ गए। पर्सनलाइजेशन, now in e-commerce what you can do is you can personalize the things accordingly. Like पहले के टाइम में you remember cakes, ठीक है, we didn't had options for cake, chocolate, pastry or maybe butterscotch or strawberry, black forest. These were the only thing which we could get. Nowadays truffle is there, you can order a chocolate bomb cake, or you can personalize it with pictures, you can do whatever you want to do, so that is there. Now price, you can obviously compare the price with different sellers, the ones who are selling it, कि आज इस site में अगर ये price है, so I'll definitely go and buy from the other side, okay. So these are certain things wherein you can go ahead. Limitations and disadvantages, obviously there are these are there as in बहुत बार ऐसा होता है we don't want to share our credit card details क्योंकि लीक हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हैकिंग वगैरह हो गया है, ठीक है। we need to be very sure and confident about the payment details what we are doing. Access to internet, बहुत बार ऐसा होता है कि like if you go to rural areas, maybe some areas are having an internet connection but then some are not, okay. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड बिजनेस, ई बिजनेस, ठीक है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स और ई बिजनेस में ये डिफरेंस है कि द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच आर डूइंग वो डिपेंड करता है। जैसे ई कॉमर्स इज कम्प्लीटली ओवर द इंटरनेट, ठीक है, इसका बहुत सारा चीज होता है। ई बिजनेस जो होता है वो वेब के ऊपर होता है, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये सब चीज के कॉम्बिनेशन से होता है। सो इन ई कॉमर्स व्हाट इज हैपनिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, but then e-business is like how people are communicating among themselves, like the businessmen and the stakeholders, like the only interested core team, कैसे वो लोग बात कर रहे हैं। अगर वो लोग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी उनका ब्रांच अलग अलग हो, या फिर वो लोग एक कंट्री ही अलग अलग शेयर करते हो जहाँ पे बिजनेस होता है, जैसे कि हेड ऑफिस कहीं पे और कुछ कहीं पे। Now business plan versus e-business plan, this is very important because how you are going to plan your e-business or business is very important, ठीक है। इसमें बताता है आपको the procedure how you are going to achieve the business goals. If I'm going too fast, you can just pause the video, take a while and then get back, or point X में आप देख सकते हो। I'm just going trying to cover the full syllabus. Okay, so constituent of e-business plan क्या क्या है, description of the business. First and foremost thing you need to describe, you need to see, analyze the industry, that आप जिस industry में हो उसमें competition कैसा है कैसा नहीं है, competitors देखना पड़ता है, market देखना पड़ता है आपको कि इस market में ये product चलेगी कि नहीं चलेगी। After that you need to develop a website. Always make sure when you are branding something, ठीक है, you need to make sure that your brand is little different from any other brand, or if your brand is serving something common, then it should be really very personalized or something extraordinary aside from the
offering that is already being done. Okay. Next is operations, and last is budget. Like what operations you're going to do, and at last budget you need to decide कि आपको कितने budget के अंदर करना है, कितनी advertising करनी है, etc. टेक्नोलॉजिकली जो है इश्यूज रिलेटेड विद द इंटरनेट इनके रिलेशनशिप्स बता रहे हैं. ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट आईपीएस. ये आईपीएस नेटवर्क आप सब लोग को पता है. व्हेन वी यूज आवर इंटरनेट देयर इज एन आईपी एड्रेस वेर इन ये चीज जो होता है, दिस इज समथिंग ऑथेंटिक एंड यू कैन नॉट मिस यूज दिस. ठीक है, तो ये जो आईपी चीज होता है ना, दिस इज फॉर मोस्टली कमर्शियल नेटवर्क जो नॉर्मल जनरल पब्लिक भी यूज करता है, विच इज नॉर्मल इंटरनेट. ठीक है, इसके रिलेशन क्या है ई बिजनेस के साथ, दैट जो डेटा ट्रांसमिट होता है इसमें से. नेक्स्ट इज इंट्रानेट. इंट्रानेट में क्या है कि इंट्रानेट जो है ये डिप्लॉय करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप एक डेटा कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर सको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, ज्योग्राफी के लिए जैसे कि पकड़ लो कि इफ द एम्प्लॉय हैज टेकन वर्क फ्रॉम होम, तो अब वो क्या डेटा बेस को खोल के काम करेगा, कैसे करेगा, हाउ द पर्सन इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए होता है इंट्रानेट. नाउ एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट इज what we can say like दूसरे रीजन, like outside the organization अगर किसी को information देखना है तो ये privacy policy को बहुत ज्यादा maintain करता है, because obviously you cannot leak the details of your company or your organization. Okay, पूरा database इसमें filled रहता है. Next, if we come ahead, relationship with e-business, इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके बहुत फ्यू एंटिटीज होते हैं, क्योंकि इसमें ये फास्ट सिक्योर डेटा तो देते हैं, बट ऑल्सो कि इसमें जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, पैसे जो होते हैं बनाने के लिए वेबसाइट वगैरह, सब कुछ बहुत महंगा होता है. ठीक है, 24/7 वेंडर्स को आप यू कैन जस्ट गो अहेड एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम. मोबाइल कॉमर्स जो होता है दैट इज एम कॉमर्स. ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में क्या डिफरेंस है वो जस्ट आप गो थ्रू कर लेना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू, but then yes, this part is really very important. अपार्ट फ्रॉम दैट टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, अगर हम लोग सॉरी ई कॉमर्स हम लोग मॉडल देखें तो उसमें B2B है, B2C, C2C, C2B, B2G एंड B2B मॉडल. ठीक है, ऑब्वियसली जस्ट स्क्रॉल डाउन, सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इट, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा आ सकता है कि EB इज C2C और B2C, तो फिर आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आप क्या करते हो. जैसे कि एग्जांपल अगर EB का मैं ले रही हूँ तो इसमें क्या है कि इसमें जो वेंडर है, ठीक है, तो यहाँ पे देर इज अ नेगोशिएशन ऑफ प्राइस, इसलिए इसको C2C बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर डील करता है. नाउ B2B इज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल. अल्टीमेटली जो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इज देयर, कंज्यूमर टू बिजनेस इज देयर एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट इज देयर. ठीक है, सो इफ यू मूव अहेड यू विल गेट टू सी द डेफिनेशंस. तो ऑलरेडी यू कैन जस्ट take the reference of the already made videos which I have already done in depth अगर understanding चाहिए. Apart from that, अगर आपको just go through करना है तो make sure कि आप जब इसको go through कर रहे हो तो आप उन सब videos को पहले से देख चुके हो. ठीक है, टाइप्स यहाँ पे बताएंगे कि क्या किस ओरिएंटेड है ये. Make sure that you do this model part. Why? Because you're going to get a lot of questions with this, wherein you will be given the examples and asked कि क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया इसकी एक फीचर बता दो. ठीक है, जैसे ई टेलर है, कंटेंट प्रोवाइडर है, तो ये कौन करता है, ये कौन सा मॉडल करता है, आपको ये पता होना चाहिए, विच इज B2C मॉडल. ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपके आएंगे. ई गवर्नेंस क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे ई गवर्नेंस में क्या रहता है, ई इज इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर द ई गवर्नेंस, एंड हियर व्हाट हैपेंस इज लाइक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है. ये क्या करता है, ये जो लीगल पब्लिक सर्विसेज होता है उसको सेफगार्ड करता है. ठीक है, इट इज फॉर दैट. Now, what are the types? G2G, which is government to government, उन तक ही रहता है, government to citizen, government to business, and government to employee. So these are the certain things which is there. That is not that important. Just go through like what are the types of e-governance. That's it. Okay. Now moving forward to ECRM and SCM. Okay. CRM stands for what? CRM stands for customer relationship management, wherein we need to have a better understanding. We need to retain our customer. That is why we are doing it. We are going to bring new customers to our business.
we need to develop new clients, we need to develop contracts and all everything, to increase the profitability of the business. These are the certain things because of which we do CRM. Okay, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सारे कस्टमर सर्विसेज और सपोर्ट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को एक ही कस्टमर को टारगेट नहीं करना, कस्टमर themselves come and we also have a good quality talk with them and maintain a relationship so that we can understand their demand and then supply accordingly. ठीक है, okay. So these are the phases wherein you can retain the customers. Types of ECRM, operational ECRM, analytical होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना होता है कि आप किस किस तरीके से कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि ऑपरेशनल कि आप क्या काम करके कर रहे हो, हेल्पलाइन दे दिया उनको, ठीक है, HR फंक्शंस होते हैं कुछ, तो ये सब चीज के बेसिस पे आप कर सकते हो। कंपोनेंट्स वगैरह देख लेना एक बार, लिमिटेशंस। Okay, now there is another topic which is supply chain management, ठीक है, SCM। ये क्या होता है, ये बिजनेस टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, उसको देखते हैं, they see how things can be coordinated. Now flow of material in a supply chain, flow of material in supply chain क्या है, flow of finance in supply chain, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन सप्लाई चेन, तो ये सब चीज है कि आपको मटेरियल जो रॉ मटेरियल्स वगैरह होता है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो उसको लेके आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है बहुत सारा चीज। फाइनेंस, पैसा बहुत जरूरी है, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एज वी ऑलरेडी नो। इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है, वैल्यूएबल रहता है, सो दैट यू कैन फोरकास्ट एंड प्लान अकॉर्डिंगली, सो द डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली। टाइप्स क्या है, रिस्पॉन्सिव, अडैप्टिव, इंटेलिजेंट, दीज आर द सर्टेन थिंग्स। ई सप्लाई चेन का कंपोनेंट्स क्या है, आपको प्लानिंग करना है, प्लानिंग करने के बाद यू एग्जीक्यूट इट एंड देन यू शिप इट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसका प्रोसेस है, प्रोसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मेक श्योर यू जस्ट गो अहेड विद द प्रोसेस थिंग। नेक्स्ट इफ वी कम फॉरवर्ड, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसका ट्रेडिशनल का क्या है, इनकन्वीनियंस होता था, हमारे को जाना पड़ता था, इनसिक्योर इसीलिए होता था क्योंकि कोई एन्क्रिप्शन वगैरह नहीं होता था, डेटा जितना भी कलेक्ट होता था वो हैंडी बेसिस पे होता था, इनसफिशिएंट कवरेज, हर एक एरिया में तो बैंक्स नहीं खोल सकते ना, हर एक गली में कुछ भी, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था, वी नीड टू गो टू बैंक्स, वी नीड टू गो टू द location wherein it is located, lack of eligibility among the buyers जो होते थे वो लोग के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी होता, बैंक होल्डर्स होते नहीं होते, ये सब प्रॉब्लम होता था, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, दैट आपको फिजिकल कैश कैरी नहीं करना होता है, यू कैन पे इट लेटर ऑन विद योर क्रेडिट कार्ड, बहुत फास्टर एक्यूरेट है, ठीक है, इट इज वेरी चीप ऑल्सो, ट्रांजेक्शन चार्जेस भी ज्यादा नहीं लगता है, चेक वगैरह से आप पे कर सकते हो, सो ये सब चीज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिशनल और ई पेमेंट सिस्टम जो अभी है उसमें वो स्लो फास्ट का डिफरेंस है, एक्सेट्रा चीज है, आप डिफरेंसेस एक बार पढ़ लेना। And always remember, there is already app which is there, is Video Masters, wherein you just can go ahead and look access to all the videos which is already there. Each and every chapters is being explained wonderfully, so just एक बार उसको read कर लेना, सुन लेना एक बार, so that you can just clear your concept with that. Okay, moving forward, what is your पेमेंट कार्ड जो है, जैसे कि अभी बहुत सारे मेथड्स हो गए हैं पेमेंट के, पेमेंट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ई मनी है हमारे पास, स्टोर्ड वैल्यू है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट, वॉलेट, कैश, ये सब चीज हमारे को दिया हुआ है, ठीक है, जैसे स्विगी वगैरह से पेमेंट करते हो, स्विगी वॉलेट में जाता है, मिंत्रा वॉलेट में जाता है, रिटर्न अगर करना पड़ता है, पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट देम टू थिंग्स, तो ये सब चीज है विच इज इम्पोर्टेंट। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम में हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। डिजिटल कैश क्या होता है, दिस इज द पेपर कैश, जैसे बॉन्ड वगैरह हो गया, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। डिजिटल वॉलेट इज देयर, जहाँ पे एक जन का पेमेंट वगैरह जो कुछ भी है वो सॉल्व होता है, वो आप स्टोर कर सकते हो, स्मार्ट कार्ड वगैरह होता है, ठीक है, इसमें फंड जैसे मेट्रो कार्ड हो गया या फिर और भी डिफरेंट कार्ड होता है। कंसेप्ट ऑफ ई मनी जो होता है, दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू विच इज स्टोर्ड एंड देन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, ठीक है।
इसका प्रोसीजर होता है कि जैसे कि अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, ई मुद्रा हो गया, ये सब हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गया, तो इसमें ई मुद्रा में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और ये सारे प्रोसीजर हैं जिसमें आप डिजिटल सिग्नेचर अपना मिल सकता है आपको। पेमेंट गेटवेज आर इम्पोर्टेंट। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपने अपना बिजनेस खोल रखा है, आपका वेबसाइट है, ठीक है, देयर इन यू कैन नॉट जस्ट पुट इन योर जीपे नंबर और समथिंग। क्या होता है कि वो चीज ऑथोराइज होना चाहिए, जैसे कि स्विगी में हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह, हर जगह पे देयर इज अ पेमेंट गेटवे थ्रू विच यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डू दी ट्रांसफर। वेब इनेबल होता है, इसमें मोबाइल डिवाइसेस वगैरह से हो जाता है ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इंक्रिप्शन वगैरह भी होता है, मोबाइल पेमेंट एंड ऑल। These are the basic things। ये चैप्टर बहुत ही इजी और सिंपल है। जस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। अगर बेसिक्स आपको पता चल जाएगा तो यू विल बी एबल टू ट्रैक द आंसर्स वेरी नाइसली। एडवांटेजेस वगैरह पढ़ लेना प्लीज। नेक्स्ट इज ERP विच इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या हो गया, इसमें है कि आप किस हिसाब से इसको बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि पकड़ लो, देयर आर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जहां पे आपको अपने ऑपरेशनल चीज को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अभी इतना कम्पिटिटिव मार्केट हो गया जहां पे यू नीड टू मेक श्योर कि आप जितने भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो और जैसे भी अपने जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनको अपने पास रख रहे हो, वो स्ट्रॉन्ग वे में होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, तो बहुत सारे डेटा होते हैं जो आप बताते हो या फिर करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो चीज भी कर रहे हो वो कैसे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको बताया गया है। प्लीज जो हेड पॉइंट्स है वो सब पढ़ लेना, जो मैंने क्लास में मार्क करवाया है, 2-3 वर्ड्स है, ठीक है, वो सब चीज को दिमाग पे रखते हुए करना ना। और लेवल्स याद रख लेना, लेवल्स को लेके भी MCQ आ सकता है कि आफ्टर द सेकेंड लेवल कौन सा लेवल आता है, बिकॉज लेवल यू कैन नॉट स्विच इट, ठीक है। Okay, after that modules of ERP which is very important। finance module होता है, इसमें क्या क्या आता है, जनरल लेजर आ गया, अकाउंट पेबल्स आ गया, ठीक है। तो फाइनेंस रिलेटेड आपका जितना भी रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग में क्या, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, एक्सेट्रा, ऑर्डर डिलीवरी एंड ऑल, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल जहाँ पे हम लोग को देखना होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता है लोगों का, एक्सेट्रा, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ फेजेस, फेज 1 2 3 4, ठीक है, तो और 5, तो ये 5 फेजेस जो है दैट ऑल्सो यू नीड टू लर्न स्लॉट वाइज, ठीक है। इसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते हो। एट लास्ट इट इज द न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। तो न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो ऑनलाइन इतना ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं कि वो हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, यू नो, विद शॉपिंग थिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स पढ़ लेना प्लीज, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह होता है, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होता है। एडवांटेजेस ये कि आप जो फैलाना चाहते हो, कस्टमर को बताना चाहते हो, वो होता है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका आ जाता है। Okay, so we have completed e-commerce. Now we will be going to BC, which is your written paper. ठीक है, always remember when you are writing your written paper, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया, what are the types of communication, to make sure what is the pattern you are going to write. This is my personal way how I used to write in my exams. Types of communication में first you're going to write what is communication, the definition of communication. Then you are going to write there are different types of communication as follows. You're just going to write the points. After writing all the points which you're going to write it down, then you need to start explaining each of the point. Underline the head and then explain it, ठीक है। 3-4 lines जितना भी possible होता है, try to write a little lengthy answers but then not as lengthy as कि teacher bore हो जाए पढ़ते 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 पढ़ते। So what you need to do, you need to be very specific and appropriate, ठीक है, precise रहना। communication क्या है उसका definition आपको पता ही होगा, ठीक है। features वगैरह पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 वे होता है, कंटिन्यूअस होता है, एबिलिटी रहता है ताकि हम लोग समझ सके एक्सेट्रा।
कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस, ठीक है ना। कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आइडिया रहते हैं, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, रिसीविंग ऑफ ये एक्सेट्रा। बट देन एलिमेंट्स में अगर हम लोग जाएं तो एलिमेंट में होता है मैसेज सेंडर, then channel, receiver, and then feedback. Feedback is very important. There is one of the most important question which usually comes in the exam, which is feedback is the essence of the communication. Explain, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इज देयर, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। कि कंसाइसनेस को रखने के लिए हम लोग लेंदी नहीं करते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। ऑल्सो दैट इट इज अ टू वे प्रोसेस, इजी होता है, वी कैन अंडरस्टैंड पीपल, ठीक है। तो फॉर्म्स क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्या हो गया कि हम लोग बोल रहे हैं, नॉन वर्बल हो गया जो हम लोग लिख के देते हैं, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी होता है, इंटरनल विच इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल विच इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये वाला एरिस्टोटल का जो मॉडल है इसको पढ़ लेना, ठीक है। एरिस्टोटल में क्या है कि इसमें ना स्पीकर रहता है, बोल रहे हैं, मैसेज देता है, ऑडियंस होते हैं जो सुनते हैं, देयर मस्ट बी एन ओकेजन एंड देन उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। शैनन मॉडल में क्या है, शैनन मॉडल में नॉइस होता है, ठीक है। नॉइस क्या है, दिस इज समथिंग अनवांटेड थिंग विच इज बीइंग कैरिड ऑन, ठीक है, या थ्रू एनी चैनल। तो देखो क्या है, सेंडर एनकोड, ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज, किसको हो रहा है, रिसीवर को हो रहा है, वो डिकोड करता है ताकि वो खुद के लैंग्वेज में समझ पाए, एक्सेप्ट करता है, उसको यूज करते हैं, देन दैट पर्सन गिव्स द फीडबैक, ठीक है। डेविड बालो का भी है, इसमें भी नॉइज है, सो देयर कैन बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन शैनन एंड डेविड बालो। Now lower level, upper level and horizontal level, these are the levels of communication. You can just refer to the videos which I've already made. What are the principles of effective communication? Very important, ठीक है, कि आपको क्लैरिटी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, ब्रेविटी चाहिए होता है, एडिक्वेसी चाहिए होता है, तो डोंट मिस दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन यूजुअली कम्स इन the examination. Now what are the barriers to communication? इसमें जो grapevine वाला part है that is very important, and apart from that semantic barrier वगैरह वाला जो point है वो चीज go through कर लेना, interpersonal barrier। बाकी तो आपको जैसे पढ़ना है वैसे आप पढ़ोगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू डू द डिस्टिंक्शन, जितना पॉसिबल हो डिस्टिंक्शन कर लेना, डिस्टिंक्शंस को मत छोड़ना। फीचर्स कंफ्लिक्ट क्या है, अनवांटेड सिनेरियो, किसी को अगर लड़ाई करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, विच इज बट ऑब्वियस की होगी ही होगी, तो ये वाला चीज देख लेना। डिसफंक्शनल और कितने तरीके के कंफ्लिक्ट होते हैं। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई एक स्पेसिफिक दो कंफ्लिक्ट का नाम देके पूछ सकता है, बाकी का टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट पूछे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रीजंस क्यों होता है और मेजर्स टू सॉल्व इट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल बहुत कम होता है, फॉर्मल हम लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल में क्या होता है कि ये लाइन वाइज जाता है, प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सुपीरियर इन द वर्कर्स, ठीक है। सो इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, प्लान्ड पाथ रहते हैं, उसको प्लान्ड वे में हम लोग चलाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जस्ट गो थ्रू दैट। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो क्या क्या है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। देयर शुड नॉट बी लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस, ब्रेविटी होना चाहिए, प्रिसिशन होना चाहिए, टू द पॉइंट थिंग, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, कुछ भी मत बोलना, ठीक है। जैसे हमारे आंसर्स, ये ना पूरा आंसर पैटर्न है, ठीक है, दैट द हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नाइस, यू नीड टू बी ब्रीफ एंड प्रिसिशन, टू द पॉइंट आंसर लिखना, एक्स्ट्रा मत लिखना, लॉजिकल वे में लिखना और अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स लिखना, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देयर, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली रहता है, उसमें देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल बी रिक्वायरिंग। ग्रेप वाइन वाला पार्ट जो मैं बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेप वाइन एक बार प्लीज गो थ्रू करना। कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हील, चेन, सर्कल, ऑल चैनल, कैसे आप किस तरीके से करना है गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। क्लस्टर पैटर्न वगैरह भी होता है। नाउ टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये इसलिए होता है ताकि स्पीड कर ले, नीटनेस होता है, एक्सेट्रा, सो जस्ट गो थ्रू दैट। ऑडियो विजुअल, अच्छा, रिमेंबर दैट email is also cheap, fax is also cheap, so there might be some questions like
which is the most convenient and economical thing. ठीक है, economical तो दोनों होते हैं, लेकिन emails are considered to be more economical. ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंपॉर्टेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है. ठीक है, सो यहाँ तक हो गया. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज ड्राफ्टिंग. ठीक है, द वंस हु कैन लर्न द चैप्टर they are good at marking, go ahead with that, but then if not then you can score marks. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको 2 अटेंड करनी होती है आउट ऑफ 3, जिसमें यू नीड टू मेक अ सीवी और मे बी सर्कुलर नोटिस. ठीक है, तो उसमें आपको देखना है एजेंडा कहाँ पे डालना है, कहाँ पे नहीं. फॉर्मेट इज वेरी इजी. ठीक है, you need to write the company's name, subject wherever is required. If subject is required, then you don't have to write the agenda. If you are writing the agenda, you will not be writing the subject. So that I have made another video. So go through the drafting video wherein you will be getting कि आपको कैसे draft करना है. ड्राफ्टिंग इज स्कोरिंग, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस फॉर्मेट में करना है. ठीक है, अकॉर्डिंगली आप अपना बना देना. मैंने सैंपल शेयर करा हुआ है. जस्ट गो थ्रू द सैंपल्स एंड देन यू विल बी डूइंग वंडर्स. सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो आदित्य गुप्ता क्लासेस का, as if you will be requiring the videos. Apart from that, the link is given in the below pattern, the below section, wherein you will be getting the PDFs link. Just go through that कि कौन कौन सा सजेशन पैटर्न मिलेगा आपको, कौन सा नहीं मिलेगा. That will be uploaded. Okay, so I wish you a very good luck and do wonders in your exam. Okay, thank you so much, children.